Hey guys, this is Manu. Welcome back to my channel Passing Milestones, and today we are going to a really cool place. So guys, we are going to the mangrove forest. Now mangrove forest क्या होता है? बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं उस फॉरेस्ट को जो पानी में होता है. तो जो पेड़ पौधे सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर, आप उसको ब्रैकिश वाटर भी बोल सकते हैं, जो ब्रैकिश वाटर में पूरा फॉरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट. सो गाइज, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे हैं इन द वर्ल्ड और कुछ उनमें से बहुत फेमस भी हैं, जैसे फ्लोरिडा मैंग्रोव इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ऑल्सो देयर इज बहिया मैंग्रोव forest which is in Brazil. But आपको you would really love to hear that the two largest mangrove forests of the world are in India. So guys, जो first largest mangrove forest in the world है, that is in the eastern part of India near the Bangladesh border, and the second largest mangrove forest is Pichavaram, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं. So Pondicherry से Pichavaram is at a distance of 90 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, एंड वहाँ तक पहुँचने में आपको 2.5 घंटे लगते हैं. Guys, mangrove forests are very important for our ecosystem because they play a barrier whenever there is a severe storm or there is any ocean erosion. They act like a barrier and they protect the entire coastal area from getting flooded. So guys, let's go to world's second largest mangrove forest today. Guys, यहाँ पर हम बीच में रुके हैं एंड यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉन्ड है विच इज़ फिल्ड विद पर्पल एंड वाइट लोटस फ्लावर्स. लेट मी जस्ट शो यू. सो जब आप जाएंगे पिचावरम, जस्ट मेक श्योर दैट यू एंजॉय योर वे एज वेल.
a beach which is very close to this mangrove forest. It's just 12 kilometers from this place. What's the name of the beach? Samiyar Patai. So yeah, I'll write it somewhere here because I don't know if I'm pronouncing it right. So let's go to the beach. At the beach, and the place looks lovely, although it is a bit crowded, but it's still beautiful. The thing is that this is the sea where it's not allowed to kind of go close to the water because it's the deep sea, and I think you should come here if you are close to the mangrove forest. That's mom going. She is my cameraman for some time, for some days now. Thanks mom for handling the camera for me.